Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with William Douglas and going to start the fresh lesson entitled Deep Water here in the class today. And after this class, we will move to the poems of this course. In fact, we have decided to go like three stories or essays and then poem, three stories and essays or then poem, and this is how we will move ahead. As you all know that the date of examination is very clear, and on 16th of February you're going to appear in your examination, so accordingly your preparation should go on, and don't be lazy at all. It is a tough time for you to manage yourself and manage your learning, and tough I say just because of the two things. Most of the time you have learnt the lessons already and then you go for preparation, and here it's quite different. You find not so much time to have learnt and then go for preparation. It is like learning and preparation both go together, and this is why I say it is a tough time. And you need to be concentrated properly and giving proper time to your study, going through everything, whether it is vocab or it is a grammar rules or it is literature. Definitely literature is a new portion for you all, so you would be giving some more time to this portion, but you cannot keep the other portions aside like grammar and vocab because they are always decider in any selections, whether it's KVS or any NVS or any UP or any other examinations. Anywhere you go, you will have to face them, all of them there. And yes, in our previous test that we held, we could see some of you not appearing in the test, and would like to suggest you all, whatever the tests are going to be held, because we have not so much time, so please do try to appear in the test, and this is how you would be able to check your preparation and go with your learning. One thing that is very positive, as I think, is our effort to go with the question session, and this is how the new lessons that you are learning almost for the first time here in the course seems to be the old ones. Okay, Pradeep, I could see you appeared in your examination, in your test, and for every one of you I said that you must try to appear in the test, whatever number of tests are going to be held there, as I told you, because that will give you confidence, and you know, confidence is a matter, and before you appear in examination, it is confidence that matters a lot. So you need to be very, very careful before you appear in your examination. And other portions like grammar and vocab, we are not left with so much time, so I think you should go with a proper preparation, and the rest that is left we would like to manage, but yes, it is time for you to manage it properly. Okay, and right, it is time for us to go with the question session. A few questions I would ask from your formal learning, and after that we'll move with a little bit biological introduction of William Orwell Douglas, and then we'll move to the lesson Deep Water that shows there's nothing impossible. If you want decide, you can always be the winner. Difficulties come and go, but you will be the winner, and that's what the message of the lesson is there. And as a competitor, you need such lessons. Okay, good morning to everyone of you. God bless you. And right, as I say, it is William Orwell Douglas, and that's a deep water.
the lesson that we have to go through. Okay. Well, so right before we move, we have to go through the question session from your formal learning. And here is the first question of the day. For how long did the narrator go abroad from the story, The Portrait of a Lady? For how long did the narrator go abroad from the story, The Portrait of a Lady? And we received the answers there on the screen coming from Vinita. She is followed by Ganeshwar. It's a Sunaina. Yeah, it's a Sumaya, not Sunaina. Sumaya and Nidhi, Subhash, Pradeep. They have all answered it correct. And the right answer is 5 years exactly. For 5 years, the narrator goes to abroad to receive higher education. Okay. What's the name of the poem that was published in a magazine named Outing in 1885? What was the name of the poem that was published in a magazine named Outing in 1885? Okay, and we have the answer there. That goes with the reply of Ganeshwar and is followed by Nidhi. They have answered it correct, and the right answer is The Voice of the Rain. Oh, no, Vinita, not that. The Voice of the Rain is the right answer from Subhash and Pradeep. That was a work of Walt Whitman published in 1885. Okay. Now I'll move with the next one. Which bird has been mentioned in the poem Laburnum Top? Which bird has been mentioned in the poem Laburnum Top? Okay, and we have the answer. The right answers are there on the screen. That starts with the reply of Ganeshwar, followed by Nidhi, Sumaya, Subhash, Vinita, Pradeep. They have all answered it correct, and the right answer is Goldfinch. Okay. What is the destination that the narrator wanted to reach in the story Silk Road? What is the name of the destination that the narrator wanted to reach in the lesson Silk Road? What is the name of the destination that the narrator wanted to reach in Silk Road? Well, exactly. So we have the answer that comes from Sumaya, and that answer is correct to be Kailash mountain. Exactly. He had his destination as a Kailash mountain there, and there he wants to go.
Okay, that's good one, Kaneshwar. Very nice. Okay, now Pradeep and Subhash, they have answered it correct with Kailas mountain. Okay, going with the next one. What are the name of the two places mentioned in the story, the last lesson? What are the names of the two places mentioned in the story, the last lesson? And we have the answers there on the screen. And that goes with the reply on the screen there, starting with the reply of Ganeshwar, followed by Nidhi, Subhash, Pradeep, Vinita. They have all answered it correct, and the right answer is Alsace and Lauren. Exactly. What's the name of the Japanese monk mentioned in the story, the Silk Road? What's the name of the Japanese monk mentioned in the story, the Silk Road? That's the name of the Japanese monk mentioned in the Silk Road. I repeat the question. What's the name of the Japanese monk mentioned in the story, the Silk Road? And we have the answer there on the screen coming from Subhash. That's a good one, Subhash. Ekai Kawaguchi. Exactly, it's Ekai Kawaguchi, the name of the monk that belonged to Japan. Okay, going with the next question, and that is, which story have you found the character Savita? Which story have you found the character Savita? I repeat, which story have you found the character Savita? And we have the answer, and the right one is coming here from Subhash, is followed by Nidhi and Vinita, Ganeshwar. That's a good one, Ganeshwar. And Pradeep, they have all answered it correct, and the right answer is Lost Spring. Okay, going with the next one. Which country did Norbu from Silk Road belong to? Which country did Norbu from Silk Road belong to? Okay, and we have the answers there on the screen coming from Ganeshwar, followed by Nidhi, Subhash, Pradeep, and Vinita. They have all answered it correct, and the right answer is Tibet. That's a good one. He was a Tibetan monk. And right, we move to the last question of the day, and that is, who wants to own a car from the story,
the lost spring. Who wants to own a car from the story, The Lost Spring? I repeat, who wants to own the car from the story, The Lost Spring? Okay, and we have the answer there on the screen. That starts with the reply of Sumaya. She is followed by Subhash, Gyaneshwar, Vinita, Nidhi and Pradeep. They have all answered it correct, and the right answer is Mukesh, exactly. Now I'll move with the next, and at first we have a short discussion on the author William Orville Douglas, and then we'll move to the story, Deep Water. Okay. William Orville Douglas was a Justice of the Supreme Court of United States. He was Justice of the Supreme Court in the United States. What is special about him? William Orville is the one holding the world record to serve the longest service as a justice for almost 36 years, 21 days. 36 years to 21 days. He served, 211, not 21, 211 days he served there as a justice. Means it is almost a kind of world record that any judge of a Supreme Court served for such a long time, like 36 years and 211 days. He was born on 16th October 1898. 16th October 1898. He was born. It is his birth time. And along with that, we see that he was appointed as the justice by President Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt was actually the President of America. And he nominated him as a justice when he was 39 year old. It was almost 39-year-old when he was appointed. 39-year-old. And then started serving the court for almost 40 years. So see, he had the estimation from time in 1975. The time has estimated him in 1975. Please write down the estimation.
God bless you, Devin. Okay, Sumaya, just enhance the quality of video, dear. Go to the quality option and go for advanced setting and enhance it. Okay, so the time in 1975 stated, please write down, the most doctrinaire, Naire, and committed civil libertarian ever to sit on the court, Okay, he was the child of William and Julia Bickford Fisk. Julia Bickford Fisk and William Douglas. They are the parents of the author. So as the time is stated that he was actually a highly estimated person and committed civil libertarian and was full of doctrinaire. So this is how he has started his work. His autobiography of Men and Mountain. Men and Mountain is the autobiography of William Orwell Douglas, appeared in 1950. 1950 is his autobiography. Autobiography of William Orwell Douglas, and he discusses in this work his actual childhood and connection with nature. Very much similar you'll find the same thing that was discussed by William Wordsworth, how childhood is connected to nature and how nature gives a special shape, special potential to our mind and to our health. So in this work he discusses the connection between childhood and nature in his life. The 2 points he discusses: the connection between nature and childhood. Since you see qualifications, date of birth and death, they are not very much important, dear, for this examination, because I have told you that this examination is a text-based examination, and whenever there is a text-based examination, the biographical record of a writer is not so much important. Okay, but one thing I would like to tell you, why do we study here a little bit about the biographical records? Because we want to know something about the author before we read the lesson. That helps us to understand it better. This is what, and it's better to understand the things with the
features you know about the author. So this is why we are discussing, and I think for examination these records are not so much important. I think so, because whatever my knowledge is for the text-based examination, I think it's very rare to find the questions from the biographical records of the author. But yes, as a good learner, you should have a bit information regarding the writer or the poetess whom you are studying here in the class. Okay, right, we move with some more points. And yes, well, he used his short name, and that was common epithet for him, Wild Billy. Wild Billy is his epithet. Wild Billy is an epithet for William. Means you can say a kind of heading that can define him to be Wild Billy, especially the opinion that he all the time put with independent and unpredictable stances that he used to take in his life. Okay, right from childhood he goes to his schools and attended Whitman College, on a school, Whitman College, that's the name of the college, for scholarship. Whitman College he attended as a scholarship program helped him to attend Whitman College, named there, and this had been the time when he learned something, and moving to Columbia Law School for graduation. Columbia Law School for graduation, and he graduated there in 1925. In 1925, he graduated from Columbia Law School, and then he joined as a faculty Yale Law School. Yale Law School. He joined there as a faculty. Okay, his life was very much important, especially from modern learning point of view. Why do we discuss here the childhood and nature? Because he was the great supporter of the pure environment, and he was a kind of environmentalist, and his environmentalism can be felt actually anywhere in his writing. So he was a great supporter of environment, and environmentalism can be seen in his work, and he was opponent of Vietnam War. He opposed Vietnam War. Vietnam War. He opposed. Means he was not a man that can support war or destruction anywhere. And on 19th January 1980, he breathed his last. 19th January 1980, he breathed his last. So this was the last day of his life that he was here.
So throughout his life, he was working for the environment and working for the betterment of this environment especially. And lifelong, as we see, he could receive the highest honor from National Audubon Society, that was Audubon Medal. Audubon Medal received in 1962, and this was the highest honor from the National Audubon Society. In 1962, he received this honor, and it was the highest honor in his life. Right, we'll move with the story of deep water. As you see that deep water can be a horrible title for anyone, and most of you love water but not deep water. You know, we are afraid of deep water. Yes, we love water, but deep water is fearful. Some of us from our childhood, due to some reason, can be afraid of something, and most of us fail in our life to overcome that afraid. But this story tells us never give up and keep running after your dreams, running after your vision, and the challenges that you face should not be left aside. Instead, you should run after them to be the victorious. And this is what you find here from this lesson of William Orwell Douglas. Okay, so here we go with the story. It had happened when I was 10 or 11-year-old. Remember, the story starts with the author or narrator. One narrator is just 10 or 11-year-old. Okay, so the story is there with this point. I had decided to learn to swim. वो 10 साल के थे या 11 साल के, उन्होंने डिसाइड किया कि तो स्विमिंग लर्न करना है. There was a pool at YMCA. YMCA के पास एक पूल था, एक तालाब है जो रिवर याकिमा के पास था. पूल जिसके पास एक रिवर थी जिसका नाम था Yakima. That was the name of the river. That offered exactly the opportunity. और मैं चूंकि यहाँ पर स्विमिंग सीखना चाहता था, तो मेरे लिए YMCA पॉन्ड या जो पूल था उसमें जाकर के अपने लिए अपॉर्चुनिटी लेना एक अच्छी बात थी. और यहाँ पर रिवर याकिमा भी एक पॉइंट थी. तो मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं 10-11 साल का हो गया हूँ, क्यों ना लर्निंग सीख लूँ. The Yakima river was treacherous. Actually, सही कहें तो ये जो रिवर है ना वो बड़ी ट्रेचरस है. इसका कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या कर जाती है. खतरनाक टाइप के रिवर है, कभी भी कुछ भी कर सकती है. मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट. मेरी माँ हमेशा ये वार्न करती थी, मुझे ये चेतावनी देती थी कि बेटा सब कुछ करना, ये रिवर याकिमा के पास मत जाना. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और जब कभी मैं जिद करने लगूं, जैसे होता है बचपन में जिद करते हैं हम लोग, जब कभी मैं जिद करने लगूं तो माँ हमेशा याद दिलाती थी. तुम्हें याद है पिछला वो लड़का उसमें कैसे डूब गया था, वो लड़की कैसे डूब गई थी. ऑल सच डिटेल्स बता करके वो मुझे समझा देती थी कि अगर रिवर याकिमा के पास मैं गया तो ड्रॉनिंग इज डन, जरूर डूब जाऊंगा.
इस तरह से वो डराए रखती थी। बट दी YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जिस पूल की मैं बात कर रहा था ये पूल बहुत ही सेफ था, बहुत ही सुरक्षित था, यहां पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो पॉइंट। स्टार्टिंग में 2 या 3 feet इसमें डेप्थ मिलता है शुरू में, और at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, मतलब मैक्सिमम इसका जो होता है वो 9 feet डीप या डेप्थ है, जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट हो गए। एक तो ये हो गया कि शुरुआत में भी ज्यादा पानी नहीं है और बीच में भी केवल 9 फीट तक पानी ही है, और 9 फीट डरावना नहीं समझा जा सकता है, नो डाउट ये डरावना तो नहीं हो सकता है ना। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow point end, while it was a 9 feet deep at the other. The drop was gradual. यहां पर जो ड्रॉप बनाए गए थे, मतलब जो गहराई का पॉइंट था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अचानक से 9 फीट थे, ग्रेजुअल थे। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आप जाते हैं, दूसरे से तीसरे पर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आपका गहराई बढ़ता जाता है। अचानक वाला नहीं था, क्योंकि खतरनाक अचानक वाला होता है। थैंक यू नेहा। शी ट्राई टू एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, दैट इज यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। थैंक यू नेहा। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ YMCA। ओके, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे वाटर विंग्स दे दिए गए थे। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल के पास गया। वाटर विंग्स क्या होते हैं? एक तरह के आप कह सकते हैं सेफ्टी रबर, जो बैलून टाइप के लगे रहते, इससे आप डूबेंगे नहीं, वो हमको मिल गए थे। और मैं पूल के पास गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मिनिमम क्लॉथ्स में, कम से कम कपड़ों में मैं इसके अंदर जाऊं। एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि मेरे जो लेग्स थे वो काफी स्किनी थे, बिल्कुल दुबले पतले सूखे सूखे मेरे पैर थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिलहाल मुझे मालूम था कि मुझे स्विमिंग सीखने के लिए अपने अंदर की इस शर्म हया से बाहर आना होगा और कोशिश करना होगा कि मैं अपने इन कपड़ों को साइड में रखूं और तैरने के लिए जाऊं। मैंने वैसा ही किया, डिड इट। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरू से ही मेरे मन में वाटर को लेकर एक तरह का अवर्जन हो गया था, एक तरह की नफरत हो गई थी। शुरू से ये नफरत मेरे मन में थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old। और ये जो वाटर से फियर है मेरा, ये फियर फ्रॉम वाटर से तब से शुरू चल रहा है जब मैं 3 or 4 year old था। तब मेरा ये डर पानी से शुरू हुआ था। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उसका रीजन था कि मैं फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर जाया करता था विथ फादर, कैलिफोर्निया बीच। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और बिल्कुल सामने की सतह पर पापा और मैं दोनों खड़े हो जाते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं तो बिल्कुल उनको लटका रहता था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी चाहे जितना मजबूत मैं पापा को पकड़े रहूं, लहरें जब आती थी तो मुझे यूं धक्का मारती थी कि मेरा हाथ वगैरह छूट जाता था और मैं नीचे गिर ही पड़ता था और लहरें मेरे ऊपर से चली जाती थी। स्वेप्ट ओवर मी, आई वॉज बरीड इन वाटर। कभी कभी तो मुझे पानी इतना गहरा हो जाता, मैं उसमें दफन सा हो जाता था। बाहर निकलने के चांसेस कम दिखते, तो ऐसा लग रहा मैं जैसे डूब रहा हूं इसमें। बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन। कभी कभी तो मुझे ऐसे लग जाए जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डर जाता था। मैं कभी कभी इतना डर जाता था कि मैं क्या बताऊं, मुझे पानी से इतना खौफ हो गया था, सांसें मेरी रुक जाती थी। फादर लॉफ्ड, फादर
हम तौर पर हंस दिया करते थे, क्योंकि एक बात तो माना जाता है कि फादर हो या मेन हो और सन हो, इनको ब्रेव तो होना चाहिए, ऐसा सोसाइटी मानती है। ये जेंडर बेस एक रिकग्निशन मिला हुआ है कि अगर आप मेल हो तो मजबूत हो, बहादुर हो, अगर फीमेल हो तो आप सॉफ्ट हो, लविंग हो। लेकिन चूंकि आजकल हम लोग ये जो जेंडर बेस्ड मिली हुई आइडेंटिटी है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, तो नो डाउट बहुत सी चीजें बदली हुई हैं, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में आपको यही देखने को मिलेगा कि मेन मीन्स टू बी स्ट्रांगर, टू बी ब्रेवर, एंड वीमेन मीन्स टू बी लविंग, टू बी सॉफ्ट। तो आज पापा को ये देखकर हंसी आ रही कि यार क्या यार, तुम भी एक लहर ने धक्का मारा और पलट गए तुम, है ना, ये अच्छा नहीं है। वो उनको हंसी आती थी सॉरी, और यह मेरी जान अटक जाती थी। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। सही बात कहूं तो मैं लहरों का जो पावर आता था ना, उस पावर को देख करके लहरों का, तो मैं तो एकदम कांप जाता था, मुझे डर लगता था, पापा को हंसी आती थी। माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। और जैसे ही मैं YMCA पूल के पास गया तो मेरी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, जो पुरानी मेरी बेकार की यादें, डर भरी यादें थी, वो फिर से रिवाइव हो गई, फिर से ताज़ी हो गई। रिवाइव्ड अगेन स्टायर्ड चाइल्डिश फियर। और एक बार फिर से मेरे अंदर वो बचपन वाला जो फियर था, वो डर था। हालांकि अभी मैं बहुत बड़ा तो नहीं हो गया था, क्योंकि 10 या 11 साल का था जब मैं ये कदम उठाया कि मुझे स्विमिंग सीखना है, और YMCA ज्वाइन मैंने किया। और जब मैं डर शुरू किया था तो मेरा डर तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, तो बहुत वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उससे बड़ा तो हो ही गया था, समझ तो हो ही गई थी। और जैसे ही पानी को मैंने देखा, फिर से वो डर मेरे मन में आने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होने वाला है, कॉन्फिडेंस में। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मेरे पास जो नए वाटर विंग्स मुझे मिले थे, उन्हें धीरे धीरे करके पैडल करने लगा, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ने लगा। जिससे हाथ पाँव चलाना होता है, दैट इज पैडल। पैर को चलाते हैं इस तरह से वाटर में, या हाथ को इस तरह से चलाते हैं, तो दैट इज पैडलिंग। ओके, तो मैं करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और मैं वहां पर यह भी देख रहा था कि दूसरे बॉयज भी थे, तो वो कैसे कर रहे हैं। देखिए, हर चीज आप जानकर नहीं करते, और ये बात तो शाश्वत सत्य है कि मैक्सिमम चीजें जो इंसान ने सीखी हैं वो देखकर सीखी हैं। अपनी खुद की लाइफ में हम लोगों ने कितनी बार चीजों को किताबों में पढ़ा है। जितना हम लोग जानते हैं ना, उसमें 90% चीजें हमने बाहर से देखी, सुनी है, कभी पढ़ी नहीं है ना। और सिर्फ 10% हमारी नॉलेज का हमने पढ़ा है, जो हमें किताबों से मिला हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है लर्निंग में। लर्निंग डज नॉट मीन जस्ट लर्न फ्रॉम बुक्स और स्कूल्स। Learning can meet you anywhere. Just keep your open heart and mind open. The things will come new. The things will come joyful in your heart, in your mind. So this is how मैं क्या करता, केवल हर बार ये थोड़ी था कि क्या बताया गया, मैं ये भी देख रहा था कि दूसरे कैसे स्विम कर रहे हैं, और उनको मैं एपिंग कर रहा था, मैं उनको फॉलो करने लगा। जैसे एक बंदर होता है ना, आपको एप करता है, वो आपको फॉलो करता है। कई बार आपने नकलची बंदर की कहानी सुनी होगी, है ना। बंदरों में एक खास क्वालिटी होती है कि वो लर्न बड़ी तेजी से करते हैं, और वो थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, जो मंकीज होते हैं, और सीखते बड़ी तेजी से। दैट इज एपिंग का सेंस यहां पर है, एप से एपिंग देम। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने ऐसा डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार ऐसा किया कि बॉयज को मैंने देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा, फिर मैंने हिम्मत दिखाई, मैं पानी में गया, और दूसरे बॉयज को देखकर मैंने भी स्विमिंग शुरू कर दी। 2 or 3 days।
but and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और अब धीरे धीरे करके 3-4 दिन चूंकि पानी में मैंने गुजार लिए थे, तो फिर धीरे धीरे मुझे ये फील होने लगा कि जैसे ठीक है, अब पानी से मुझे वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है, और मैं अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझ रहा था, पानी के साथ मुझे खौफ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी समय मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हैपेंड होता है, उसी समय मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो जाती है, एक हालात मेरे खराब करने वाली घटना घट जाती है। आई वेंट टू द पूल वेयर नो वन एल्स वॉज देयर। आज मैं जब पूल के पास पहुंचा, YMCA पूल के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कोई नहीं है। अच्छा, ये दो बातें होती हैं। जब आप अकेलेपन में होते हैं तो एडवेंचर करने का मन आपका बहुत करता है, मतलब कुछ अलग सोचते हैं आप, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं अकेलेपन में। और दूसरी बात यह है कि जहां तक अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर में अकेलेपन में डर भी बहुत लगता है। ये बात 100% सही है कि जब पानी शांत हो और पूरा वातावरण शांत हो, वहां कोई और ना हो और आपको अकेले ऐसे वाटर में जाना हो, तो डर तो लगता है। लेकिन आज मेरे लिए वो मौका था, अब आपको उसको मिस फॉर्चून कहो या मिस एडवेंचर कहो, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ हुआ कि आज मैं जब पहुंचा वहां मैं अकेला ही था। द प्लेस वॉज क्वाइट। आज जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल। पानी एकदम शांत था, एकदम स्टिल था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही शांत, गुड मॉर्निंग स्नेह, ये बहुत ही शांत जगह थी। और मैंने आपसे ये भी कहा कि शांत जगहों पर डर बहुत लगता है, और पानी वाला जगह हो तो खास तौर से डर लगता है। अच्छा भी लगता है, डर भी लगता है। तो YMCA बिल्कुल शांत था, खामोश था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब। और सच बात तो यह है कि 9 फीट पर जो टाइल्स लगी थी ना, वो बॉटम भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। मतलब इतना शांत था, इतना शांत था कि पानी से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो टाइल्स लगी हुई नजर आ रही हैं। तो टाइल्ड बॉटम जो था वो भी बहुत क्लियर, स्पष्ट रूप से विजिबल था, वाइट। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। जरूर मैंने 2-4 दिन में कॉन्फिडेंस गेन किया था, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने गेन नहीं कर लिया था कि कोई भी ना हो और मैं पानी में कूद जाऊं। ऐसा कॉन्फिडेंस अभी मेरे मन में नहीं आया था कि कोई भी ना हो और मैं पानी में कूद जाऊं। लेकिन चूंकि अब मैं अकेला फंस गया था तो कुछ न कुछ करना था। डर फिर भी लग रहा था, टिमिड। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. मैंने भी डिसाइड किया कि भाई अकेले जाने से क्या फायदा, मैं पूल के किनारे बैठ जाता हूं, अकेले बैठ जाता हूं, जब दूसरे आएंगे तो फिर उनके साथ मिलकर मैं जाऊंगा। ये अच्छी बात है, समझदारी की बात है, क्योंकि आप अभी लर्न्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो अकेले आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये तो समझदारी का काम किया, क्योंकि पानी के साथ लोग, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, खिलवाड़ नहीं, आग और पानी के साथ खिलवाड़ नहीं। और ये बात यहां पर विलियम ने भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया कि अकेला हूं, डर लग रहा है, अभी 3-4 दिन ही तो मैंने सीखा है, इसलिए पानी से अपने आप को दूर रखना है। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. अच्छा, यहां पर अभी ज्यादा मुझे वक्त नहीं हुआ था कि मैंने देखा कि एक अच्छा खासा लड़का वहां पर आ जाता है, अच्छी खासी उसकी बॉडी बिल्डिंग है, और वो वहां उस जगह पर आ जाता है जिसको उन्होंने कहा बिग ब्रूसर ऑफ बॉय। बॉय के सामने एक मोटा तगड़ा आदमी, मजबूत कद काठी वाला वहां पर आ जाता, बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय। Probably 18 years old, शायद इसकी उम्र जो थी लगभग 18 साल की थी, और मैं था 10-11 साल का। 18 साल का शायद यह था। He had thick hair on his chest, क्योंकि इसकी उम्र हो गई थी
तो उसके चेस्ट पर घने बाल साफ दिख रहे थे। He was a beautiful physical specimen। सच कहें तो उसके देख करके ना उसकी बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव थी। उसकी बॉडी को देख करके एक जो फिजिकल स्पेसिमेन आप कह सकते हैं ना कि खूबसूरत शरीर का कोई उदाहरण, स्पेसिमेन उदाहरण, तो वो ये जो बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय आया था वो सच में फिजिक का एक खास नमूना था। बड़ा खूबसूरत उसका शरीर था, बॉडी था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। उसकी आर्म्स थी जिस पर रिपल करती हुई मसल्स थी, मतलब लहराती हुई मसल्स बनी हुई थी। उसके लेग्स को मैंने देखा, उसके लेग्स में भी रिपल करती हुई लहराती हुई मसल्स थी। और एक मेरी थी, एक मेरी भी थी लेग्स, स्किनी लेग्स। समझ में नहीं आ रहा था कि मांस कहां से शुरू हो रही है और हड्डी कहां से शुरू हो रही। तो मैंने देखा उसकी बॉडी अच्छी थी। दैट शोड रिपलिंग मसल्स ही येल्ड हाई स्किनी। उसने मुझसे कहा, हेलो सुखे, हाउ डू यू लाइक टू बी डंक्ड? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें उठाकर इस पानी में फेंक दूं तो? विद दैट ही पिक्ड मी अप। अभी वो कह ही रहा है कि बेटा तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूं तो, और इतने में उसने मुझे उठा लिया। He picked me up and tossed me into the deep end। और टॉस्ड किया, ये उछाल कर मुझे फेंका और मैं जाकर के डीप एंड, जहां शायद सबसे गहरा हिस्सा था 9 फीट का, उस 9 फीट वाले सबसे गहरे हिस्से में बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय ने मुझे फेंक दिया। डीप एंड में मुझे फेंक दिया, टॉस कर दिया। ऐसा लगता है जैसे सिक्के वगैरह उछाल रहे ना, उसे मुझे उछाल दिया, एकदम हवा में लहरा दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। जब मैं गिरा पानी में तो मैं सिटिंग पोजीशन में था, मतलब जैसे ऐसे बैठे हुए सीधे पानी में गिर रहा हूं, सिटिंग पोजीशन में पानी में गिर रहा हूं। स्वैलोड वाटर, नेचुरल है, थोड़ा बहुत पानी में स्वैलो कर गया, निगल गया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी मेरे अंदर चला गया। स्वैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। अब सीधे सीधे मैं पानी को पीता हुआ बॉटम में आ गया, नीचे आ गया। 9 फीट नीचे बैठे हुए पोजीशन में मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और शैक्षिक रूप से किसी भी तरह से तैयार नहीं था अकेले उस गहरे पानी में जाने के लिए। जो मेरे साथ दुर्घटना हुई, मैंने कहा कि बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय ने मजाक मजाक में ही सही, उसे शायद मालूम था या नहीं मालूम था, उसने मुझे उठा करके फेंक दिया पानी में। और मैं गिर कहां रहा हूं पानी में? सबसे गहरे वाले हिस्से में, पूल के जो 9 फीट गहरा था उसमें बैठे हुए पोजीशन, सीधे मैं गिर रहा हूं वहां पर। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मैं डरा जरूर था, लेकिन अभी इतना मैं नहीं डरा था कि मैं आउट ऑफ विट्स हो जाऊं, अपना मानसिक संतुलन खोलूं या मुझे कुछ समझ में नहीं आए। देखिए, जब जिंदगी खतरे में पड़ती है तब दिमाग शार्प काम करने लगता है। आपने खुद अपनी लाइफ में कई बार बात महसूस की होगी। जब तक आपके जिंदगी में आराम है तब तक आप इस चीज को महसूस नहीं करते हैं, बट लाइफ जब आपकी खतरे में पड़ जाती है ना, तो आप ये महसूस करते हो कि आपका दिमाग मैक्सिमम काम कर रहा होता है। ये हमारे शरीर की भी यही हालत है। जब हमारी जिंदगी खतरे में पड़ती है तो ये शरीर भी सबसे अच्छा काम कर जाती है। मतलब जो हमने इस शरीर से कभी मदद नहीं पाई होगी ना, वह मदद भी ये शरीर हमको दे देती है। तो मैं पानी में गया जरूर था और मुझे ये मालूम था कि पानी में कोई और है नहीं और कोई मुझे बचा नहीं सकता। तो मेरा दिमाग अभी काम कर रहा था। मैं डरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं डरा कि दिमाग मेरा काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। अब मैं पानी में डूब रहा हूं। सोचिए क्या प्लानिंग होती है। मैं पानी में डूब रहा हूं और पानी में डूबते डूबते मेरी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या चल रही है देखिए। वन माई फीट हिट द बॉटम। मेरी प्लानिंग ये चल रही है कि जब मेरा पैर बॉटम को हिट करेगा, मतलब मैं जब वहां पानी पहुंचूंगा, आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस बॉटम को टच करके मैं बॉटम से एक बिग जंप करूंगा।
और बिग जंप में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और जितनी ताकत से मैं नीचे जा रहा हूं उतनी ताकत से मैं ऊपर बाहर को भी आ जाऊंगा, बिग जंप करूंगा। ऑन द कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, पैडल टू द एज ऑफ द पूल। मैंने सारा प्लान बना लिया। कैसे कि मैं नीचे जब पहुंचूंगा तो मैं जोर से अपने पैरों से हिट करूंगा सरफेस को, बॉटम को, और जितनी तेजी से मैं जा रहा हूं उतनी तेजी से मेरी ताकत नीचे भी जाएगी। मैं इसको हिट करूंगा ताकि मैं ऊपर की ओर आ सकूं, और जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा, ठीक है, खुद को फ्लैट कर लूंगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, कभी आदमी फ्लैट बॉडी में नहीं डूबता है, जब डूबता है बॉडी सीधी हो जाती है तभी डूबता है ना। तो फ्लैट कर लूंगा और फिर धीरे धीरे करके मैं अपने पैरों को चला करके एज किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये सारी प्लानिंग चल रही है, मतलब डूब रहा हूं, डर है, लेकिन इतना डर नहीं है कि मैं अपने आप को बचाव की कोशिश ना करूं। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप डूब रहे हैं, आपको जो भी परेशानी हो, कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हां, कोशिश करने से पहले यह भी समझना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह की कोशिश की जाए, है ना। क्योंकि हर बार कोशिश ही नहीं होती है सक्सेसफुल, किस तरह की कोशिश की जाए यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो अभी वो प्लान तो हो गई, कोशिश करना है कि नीचे पहुंचेंगे, सरफेस को टच करेंगे और उसके बाद हम जंप करेंगे, सीधे बाहर निकलेंगे, सीधे लेट जाएंगे, मतलब पानी पर ऊपर ऐसे लेट जाएंगे फ्लैट, और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को हाथों को चलाते हुए, पैडल करते हुए किनारे पहुंच जाएंगे। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, लेकिन यह था मेरा सोचना। अब आप सोचिएगा 9 फीट गहरे पानी में डूबने के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन जितना भी लगा उतने में मैंने यह सोच लिया। और 9 फीट पानी में डूबना मुझे अभी लग रहा बड़ा लंबा समय हो गया, है ना। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, 9 फीट ही था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे बहुत लंबी यात्रा हो गई। Those 9 feet were more like 90। ये जो 9 फीट थे, अब मुझे फील हो रहा था जैसे कि ये तो 90 हो गए, मतलब 9 फीट ना होकर के ये 90 फीट वाली मुझे फीलिंग दे रहे थे। ये बात उस तरह से होगी, आप समझ रहे होंगे ना। इंतजार, जब आप किसी चीज का इंतजार करने लगते हैं तो कितनी भी आसान क्यों ना हो, वो मुश्किल सी दिखने लगती है। और शायद यही बात यहां पर है, क्योंकि प्लानिंग सारी हो गई, बॉटम को टच करना है, हिट करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन पहले बॉटम तो मिले। अब बॉटम पे पहुंचने के लिए हमें 9 फीट ट्रेवल करना है या जर्नी करनी है, लेकिन ये 9 फीट भी आज आसान नहीं लग रहा है। अपने आप में 90 फीट की फीलिंग दे रहा है कि लगभग 90 फीट की मैं दूरी को तय कर रहा हूं, 90 फीट। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अभी मैंने बॉटम जो 9 फीट का है उसको टच नहीं किया है, लेकिन मुझे ये फील होने लगा जैसे मेरे जो लंग्स हैं, जो मेरे फेफड़े हैं, वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। शुरू में ऐसा होता है, आपको उसको भी कूल डाउन करना पड़ता है। देखिए, जब भी मुसीबत में हो जाए कोशिश करना है, ठीक है, लेकिन अपने साइको को पूरा कंट्रोल करके, मतलब अपने मन को, अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करके आपको कोशिश करना है। अगर आप ऐसे कोशिश करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपका शरीर या मन घबराता रहेगा और आप कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस ठीक से नहीं हो सकते हैं। इसलिए दिमाग को शांत रखना होगा। माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे लंग्स फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरी फीट ने 9 फीट वाले बॉटम को टच किया, मैंने फिर से दिमाग लगाया। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जितनी स्ट्रेंथ है, मैंने पूरी स्ट्रेंथ को एक इकट्ठा किया एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और मैंने अपवर्ड आने के लिए, जंप करके ऊपर की ओर आने के लिए मैंने पूरी अपनी कोशिश कर दी, लगा दी पूरी ताकत। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैं कैसे अपने आप को सोच रहा था, जैसे कॉर्क होता है ना, कोयले का टुकड़ा, तो उसको आप नीचे फेंके, जब नीचे जाता है, लेकिन जितनी स्पीड से नीचे जाता है उतनी स्पीड से ऊपर भी आ जाता है। तो मैं अपने आप को वैसे ही फील कर रहा था, कॉर्क की तरफ बाहर आ जाऊंगा। इंस्टेड
आई केम अप स्लोली। ये बात ठीक है कि मैंने सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह आ जाऊंगा, लेकिन मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ नहीं पाया, मैं थोड़ा स्लो आ रहा था, स्लोली। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैंने सोचा शायद मैं बाहर आ गया हूं। मैंने अपनी नजरों को खोला और मैंने देखा कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी ऐसा जिसमें मैं साफ तौर से देख सकता था कि येलो कलर के लकीरें या उसमें टिंज दिख रही थी। आई ग्रू पैनिक की। मैं डर गया क्योंकि मुझे पानी से बाहर अब तक होना चाहिए था और अभी भी मैं पानी के अंदर ही था। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रोप। मैं ऊपर ऐसे हाथ चला रहा था जैसे ऊपर कोई रस्सी है और मुझे रस्सी पकड़कर ऊपर जाना है, उसको ग्रैब करना था, रस्सी को पकड़ना था। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं लाख कोशिश कर रहा था लेकिन ऊपर कोई रस्सी तो थी नहीं। मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था और हर बार मेरे हाथ में पकड़ में केवल और केवल पानी आ रहा था, वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। धीरे धीरे मेरी सांसें फूलने लगी, मैं परेशान होने लगा, सफोकेट होने लगा। आई ट्राइड टू येल। मुझे मन किया कि मैं जोर से चीख पड़ूं, चिल्ला पड़ूं, बट नो साउंड केम आउट। क्योंकि मैं पानी के अंदर था, चिल्ला भी नहीं सकता था, मेरी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस का ऊपर का हिस्सा, थोड़ा सा आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आई। मतलब लास्ट में मुझे फील हुआ कि मेरी आईज और मेरी नोज, ये दो आउट ऑफ वाटर फील हुई। लेकिन बोलने के लिए तो मुंह चाहिए ना, नाक से तो बोलेंगे नहीं, मुंह चाहिए, और नाक अभी मुंह पानी के अंदर ही था। बट देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा माउथ तो पानी से बाहर आया नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। कहने का मतलब सारी प्लानिंग मेरी थी, लेकिन अब प्लानिंग थोड़ी सी परेशानी में जाने वाली है, क्योंकि मैंने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। जितनी स्पीड से मैंने सोचा था नीचे से ऊपर आऊंगा वैसा हुआ नहीं, और बाहर मेरा माउथ नहीं निकल पाया है, केवल नोज और आईज बाहर निकल पाई हैं। मैं चाहता था बोलना लेकिन बोल नहीं पाया। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।